students. Today we discuss about the cytoplasm. Already we have discussed about the plasma membrane and cell wall. Inside the plasma membrane, there is a liquid-like translucent substances is present that is known as the cytoplasm. This is the structure of your cell, and this is the structure of your nucleus. This is your nucleus, and this is your cell wall. In between the nucleus and cell wall, a liquid-like or jelly-like substances is present. That substances is known as your cytoplasm. The cytoplasm is divisible into two parts. One is your cytoplasmic matrix, and second one is your cytoplasmic structure. Okay, cytoplasm जो रहिला हम न्यूक्लियस और सेल वॉल भितर गोटे अर्ध तरल अवस्थार जिनस थाए ताको कुआजे साइटोप्लाज्म जोटा कि तुम मैंने पढ़िथिलो कोष जीवक से साइटोप्लाज्म को हम दुई भाग विभक्त कराइछि गोटे अछि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स आ गोटे अछि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर. ये जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होइला तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज डिविजिबल आल्सो टू पार्ट्स. One is your outer ectoplasm, another is your endoplasm. Okay, जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स रहला ए साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स को हम दुई भाग विभक्त कराइछि. ए बाहर पाकु जो जिनसला रहला ताको कुआजे एक्टोप्लाज्म एवं भीतर पाकु जो जिनसला रहला ताको कुआजे एंडोप्लाज्म. ओके, देन the cytoplasmic structure. ए जो साइटोप्लाज्म भितरे हमर जो सेल ऑर्गेनेल्स गुडा कर जाने जेमति तमरा माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्गी बॉडीज हो, दैट इंक्लूड इज योर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर. ए साइटोप्लाज्म भितरे ए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर किबा साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल भितरे मटेरियल ट्रांसपोर्ट करिया पई हमर साइटोप्लाज्म दा हेल्प करि थाए. बुझि पाइलो समस्त साइटोप्लाज्म विषय. तो साइटोप्लाज्म होची तमर कोष जीवक and it is present in between your nucleus and cell wall. It is a jelly-like substances and it is divisible into two parts. One is the cytoplasmic matrix, another is the cytoplasmic structure. The cytoplasmic matrix is your jelly-like substances. It is divisible into two parts. One is your ectoplasm, another is your endoplasm. The ectoplasm is the outer substances on the cytoplasm, and the endoplasm is the inner substances of the cytoplasm. And the next is your cytoplasmic structure. The cytoplasmic structure is your different cell organelles. Okay, different cell organelles present in the cytoplasm, that is known as your cytoplasmic structure. Then what is the work of your cytoplasm? The cytoplasm helps the transport of the different materials between the different cytoplasmic structures such as your mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum, जहाँ सेल ऑर्गेनेल रहिला से सेल ऑर्गेनेल भितरे तमर मटेरियल ट्रांसफर करिबारे साइटोप्लाज्म हेल्प करि थाए. देन नेक्स्ट वन इज योर साइटोस्केलेटन. साइटोस्केलेटन कोन? साइटोस्केलेटन इज द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कवर द सेल. सेल ऊपर एमिति जाल भलिया किछि स्ट्रक्चर थाए ताको कहजे साइटोस्केलेटन. ओके, ए जो जाल भलिया स्ट्रक्चर थिबा जोडा कि ताको प्रोटेक्शन करि थाए सेल को ताको कहजे हमर साइटोस्केलेटन. द साइटोस्केलेटन इज consist of by the three substances. One is your microtubule, second is your microfilament, and third one is your intermediate filament. Okay, आम जो साइटोस्केलेटन रहिला साइटोस्केलेटन को हमर तीनटा सब्सटेंसेस को नेकी तयारी हिची कोटे होची माइक्रोट्यूबुल आ गोटे होची माइक्रोफिलामेंट आ गोटे होची इंटरमीडिएट फिलामेंट. देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया.
mitochondria is generally present in your cytoplasm and it was first discovered by your Kolliker. माइटोकॉन्ड्रिया को आमर कॉलिकर फर्स्ट डिस्कवर करथिले एवं ऑल्टमैन लेटर ऑल्टमैन named it as the bioplast and C. Bender named it as mitochondria. Okay. आमर कोलिकर माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट डिस्कवर करथिले एवं ऑल्टमैन माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट बोली ना देथिले एवं सी बेंडर या को माइटोकॉन्ड्रिया बोली ना देथिले. And the mitochondria is found in the generally eukaryotic cell and absent in prokaryotic cell. And the mitochondria is tennis rocket-like structure, oval-shaped structure, or discoid-like structure. That is the difference in shape and size. Generally, mitochondria is this like structure. This is the structure of your mitochondria. That is the oval-like structure. It is consist of two membranes. One is an outer membrane, another is an inner membrane. Okay. Mitochondria consists of two membranes. One is an outer membrane and the second one is your inner membrane. The outer membrane is smooth in nature. Smooth माने इट देखो किसी projection नहीं किसी नहीं ये पूरा oval like structure अच्छी तो it is smooth in nature. But inner membrane forms a finger-like projection. Finger-like projection देखो इटा भीतर को पसी जाइए that is known as a finger-like projection. Okay, this is finger-like projection and this finger-like projection is known as your cristae. This finger-like projection is known as your cristae. In cristae, a number of granular particles are present. This like structure. This is known as your oxysomes or F1 particles. Inside the inner membrane, the jelly-like substances is present. That is known as your matrix. And inside the matrix there is present a number of granular particles that is known as the ribosomes and also there is present this like structure that is known as your DNA. तो मैंने समझ जानिथिबो जे न्यूक्लियस भीतर डीएनए अछि किंतु एमिति दीटा सेल ऑर्गेनेल अछनी जा भीतर कि डीएनए थाए तमर सेटा होची कोटे होची माइटोकॉन्ड्रिया आ होची क्लोरोप्लास्ट ए दीटा भीतर हमर डीएनए थाए हैला एटा होची स्ट्रक्चर ऑफ योर माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल. आउटर मेम्ब्रेन is smooth in nature. Inner membrane form a finger-like projection and the inner membrane that forms a finger-like projection that is known as a cristae. Inside the inner membrane liquid-like substances is present that is known as a matrix. And inside a number of the granular matrix, a number of the granular bodies are present that is known as ribosomes. And inside the matrix also DNA is present. Then we will discuss about the function of mitochondria. There is present the oxysomes and F1 particles. This is help in the respiration. Already तब मैंने पढ़ी थी respiration कौन? Respiration is that is the breaking down of the glucose and formation of the ATP. That process is known as your respiration. A respiration दा हमरा ए mitochondria रे ही हेइथाय. Then mitochondria is otherwise called as semi-autonomous body. What is the meaning of semi-autonomous body? Semi-autonomous body माने होची mitochondria कौन करे गोटे निचर अविकल कॉपी तैयारी करि पारे. अविकल कॉपी माने होची रेप्लिकेट करि पारे. कोन पय रेप्लिकेट करि पारे? There is present a DNA strand. से DNA strand थिबा जको से तार निजर गोटे अविकल कॉपी करि पारे सेति पय ताको कुआ जे semi autonomous body. Then next, mitochondria is also called as powerhouse of the cell. Why it is called as powerhouse of the cell? तमे पढिथिबो शक्ति संरक्षित केंद्र ओडिया रे. So that is known as your powerhouse of the cell because it produce ATP by the process of respiration. से कौन करे?
रेस्पिरेशन द्वारा एटीपी फॉर्मेशन करता है और एटीपी टाको स्टोर करके रखी थाए सेति पई ताको कहै छै पावर हाउस ऑफ दिस सेल ओके दिस इज ऑल अबाउट योर साइटोप्लाज्म साइटोस्केलेटन एंड माइटोकॉन्ड्रिया थैंक यू टू ऑल